It's a very bizarre situation that out of all the people, Congress, then earlier we heard other day the PDP. I'm not very sure what's the stand of National Conference yet, but I'm sure they're also going to throw crocodile tears on the plight of Kashmiri Hindus, because the genocide of Kashmiri Hindus happened right under these guys' watch. National Conference and Rajiv Gandhi's Congress in Delhi, they were in alliance. And on 19th of January 1990, that dreadful night, and this so-called duly elected Chief Minister Farooq Abdullah, I call him coward. He fled, abandoned, abdicated his responsibilities, left Kashmiri Hindus to the mercy of Kashmiri Hindus. That was Congress, and left Kashmiri Hindus to the mercy of jihadis. That was Congress and alliance of Congress and National Conference. And when Mufti Muhammad Sayyid, the PDP's guy, because I want to connect, because they're going to come forward, and I called it a bizarre situation, I'll come to that. When Mufti Muhammad Sayyid, India's first Muslim, so-called Muslim Home Minister, he released dreaded terrorists in exchange for the release of his own daughter. When it came to the safety of Kashmiri Hindus who were being hunted in Kashmir, who were being hounded out in Kashmir at the very moment, and he chose silence. He went paralytic politically. So that's what I say, it's a bizarre situation. These people are trying to empathize with Kashmiri Hindus, while as Bharatiya Janata Party that has stood with the community for all these years is showing total indifference, especially the governor. Recently he says, "Jo nokri nahi karoge to tankha nahi milegi." I mean, is this how this megalomaniac governor has to be using a language against the survivors of genocide? And what is the plight? I just want the nation to know through you. These people, they're not there voluntarily. The state, the government, then it was started with Congress, exploiting the economic deprivation in the community. We have poor people in the community, and they gave them the job which we needed, with the government's responsibility to give jobs to the survivors of genocide, gave them jobs in the very villages and towns. From their families were hounded out with the jihadis. And at this moment of time, they're insisting you go back as if, they are guinea pigs, and we must offer them to the jihadis who are issuing one after another threatening letters, giving the list of the Kashmiri Hindus who are on their targets. And mind it, this is not only the demand. Relocation in Jammu is not only the demand of Kashmiri Hindus, right, who are the principal victims of Kashmir jihad. This is also the demand of Jammu Dogras who have been employed in Kashmir. They're also protesting in Jammu. So basically all the nationalist forces, all the Hindus, be Dogras or Kashmiri Hindu, they are seeking relocation because they are seeking right to life and dignity. And about Ghulam Nabi Azad, let me also tell you, when he was the chief minister, Congress under the Congress PDP alliance in Jammu and Kashmir, this man was the chief minister of Jammu and Kashmir, and Bita Karate, you heard of it, the Farooq Ahmed Dar, the self-confessed butcher of Kashmiri Hindus, he was released. And you know what were the observations of the judge that time? Right under the nose of Ghulam Nabi Azad, that we know there are serious charges against this accused, but the public prosecutor, the prosecution has failed to pursue the case. This happened under the watch of Ghulam Nabi Azad. And Prabhu Chawla, yes, Times of India has been group editor. He was talking to him on the CD Baat. That was a very popular program once upon a time. And this, at the end of the term, because Kashmiri Hindus never featured in the main narrative or discourse whenever you talked about Kashmir, it was only about how India could be compromised on Kashmir. And this guy asked, Prabhu Chawla asked him, what about Kashmiri Punit? The fag end of the interview. And he said, "Hum kya kare? Utha ke le jayenge unko? Wo jana nahi chahte." This was callousness of this congressman. And I'm very, very shocked that BJP is showing insensitivity, and these people under whose watch Kashmiri Hindus suffered genocide, and they are trying to empathize with us.
पार्टी के चीफ गुलाम नबी आज़ाद ने एक बयान दिया है जहां पे उन्होंने कहा है कि कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ को टेम्परेरी ट्रांसफ़र कर दिया जाए जम्मू में जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती है कश्मीर में। कैसे देख रहे हैं आप इस? मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, बड़ी अद्भुत परिस्थिति है कि जिन पार्टियों जैसे कांग्रेस हो, मुफ्तीज हो, अब्दुल्लाज हो, मुझे अभी मालूम नहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के क्या स्टैंड है इसके ऊपर, लेकिन मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहता हूं क्योंकि इनकी नाक तले कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ और ये मगरमच्छ के आंसू अभी बहा रहे हैं कि कश्मीरी हिंदुओं को आप वहां पर रिलोकेट करो। और जब भारतीय जनता पार्टी जो इतने साल किसी हद तक हमारे साथ खड़ी रही और वो आज की तारीख में इनसेंसिटिविटी, बिल्कुल कोई भी उनको कदर नहीं हो रही है कि कश्मीरी हिंदुओं की वहां पे क्या हालत है। जिन्होंने बोला कि हम जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पे बैन लगा रहे हैं क्योंकि JKLF ने कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार में मुनव्वस है, लेकिन आज लेफ्टिनेंट गवर्नर इतनी इनसेंसिटिविटी दिखा रहा है। वो कहता है नौकरी तनख्वाह, घर में रहोगे तो नौकरी तनख्वाह नहीं मिलेगी। और मैं बताना चाहता हूं कि ये तो मेगालोमैनिया है ना, तुम लोग इतनी इनसेंसिटिविटी दिखा रहे हो नरसंहार के जो सर्वाइवर्स हैं उनके लिए दिखा रहे हो। और जहां तक कांग्रेस की बात है, जब 19 जनवरी 1990 में जो दर्दनाक रात जो कश्मीरी हिंदू को झेलनी पड़ी वहां पर, जब पूरे कश्मीर के अंदर इस्लामिस्ट नारे लगा गए थे, यहाँ क्या चलेगा निज़ाम मुस्तफ़ा, और जहादी जो है AK-47 से लेके कश्मीरी हिंदू उसको घर में, मोहल्लों में, गाँव में ढूंढते फिर रहे थे वहां पे। तो ये कायर, मैं उसको बोलता हूँ फारूक अब्दुल्ला, जो चुना हुआ मुख्यमंत्री था, ये भाग गया और कश्मीरी हिंदुओं को उन जहादियों के हवाले छोड़ के गया। आज वो कभी कभी वो सिंपैथाइज करने की कोशिश करते हैं हमारे साथ। और उसी वक्त, उसी दौरान हिंदुस्तान का पहला मुसलमान गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद दिल्ली के अंदर बैठा, उसने अपनी बेटी को जहादियों से छुड़ाने के लिए कई खतरनाक दहशतगर्द छोड़ दिए। लेकिन जहां कश्मीरी हिंदुओं की सेफ्टी की बात आई, वो उनको तो पॉलिटिकल लकवा लग गया। आज वो महबूबा मुफ्ती कुछ दिन पहले बता रही थी, हाँ इनके साथ इनकी सेफ्टी यहाँ पे नहीं है। तो मैं उनकी हाँ, जहाँ तक ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का, कांग्रेस का ये रहा है हाल इनका, तो ये जब मगरमच्छ के आंसू बहाते तो मुझे अजीब लगता है। और भारतीय जनता पार्टी जिसको संवेदना दिखानी चाहिए, वो उनका लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ पे वो मोटर माउथ की तरह बोलता है वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ, देखिए कश्मीरी हिंदुओं की जो अभी जो खाली वो हिंदू कश्मीरी हिंदू नहीं है, वहां पे डोगरा हिंदूज हैं जो किसी स्कीम के अंतर्गत कश्मीर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, वो भी धरने पे बैठे हुए हैं। और ये सारे राष्ट्रभक्त हिंदूज हैं जो कहते हैं कि हम भारतीयता पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हम धर्मा के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन हम डिमांड कर रहे हैं एक जीवन और डिग्निटी के लिए, राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। और आप उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। कितने महीने, लगभग 6 महीने से ज्यादा होने लगे हैं उनको वहां पर बैठे हुए, आप एक के बाद एक कटाक्ष उनको कर रहे हो। और इन लोगों को जिनकी नाक तले कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ, वो आके उनके साथ संवेदना दिखा रहे हैं। ये बड़ी अजीब सी परिस्थिति है। मैं समझता हूं कि सरकार को उसका ध्यान रखना चाहिए। मैं समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे इसकी प्रतिक्रिया दूं, लेकिन जो कश्मीरी लड़के लड़कियां वहां पर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर प्लीज आपके द्वारा बताना चाहता हूं, उनके ऊपर संवेदना दिखाइए। उनका हक है ये। वो कोई गिनी पिग्स नहीं है कि जो आप आपके सेकुलर एक्सपेरिमेंटेशन कश्मीर के अंदर करना चाहते हो, जहाद को सेकुलराइज करना चाहते हो। हिंदुओं को क्यों बलि चढ़ा रहे हो? निहत्थे हिंदुओं को दफ्तरों के अंदर मार रहे हो, स्कूल के अंदर मार रहे हैं, तो आप उन्हीं को भेज रहे हो वहां पे। ये बड़ी अजीब सिचुएशन है।